So, good evening, students. As I have started your chapter, The Rise of Nationalism in Europe, and in that chapter only I am moving further. So, now the idea came that the French Revolution, an idea of nation. The first one is the revolutionaries further declared that it was the mission and destiny of the French nation to liberate the people of Europe from despotism. So, anybody knows the meaning of despotism? Okay, no problem. So, actually, despotism is a term in which you can say the central power is the central power of a person. He holds the central power or the main power, that you can say. And Hindi you can say despotism. So despotism means in Hindi you can say Tanasahi. So you might have heard the name of Hitler. He was a dictator. So despotism. Now it is clear the term despotism. Now the second point is the Civil Code of 1804, or you can say simply the Charter, usually known as the Napoleonic Code, did away with all privileges based on birth, established equality before the law and secured right to property. So, till now, is there any problem? You are facing any problem? Already I have said you that I will go bilingual. If you are not understanding, if you are not comprehending, then I will make you understand in Hindi also. Moving further, the third one is students and other members of educated middle class began setting up Jacobin Club. So have you ever heard the name of club like this, Jacobin Club? What is Jacobin Club? Can anybody explain? Okay, then let me explain. Jacobin Club is Friends of Freedom and Equality, were commonly known as Jacobin Club. It was founded in 1789 and its founder was Maximilien Robespierre. So it was founded in 1789, and who was the founder? The founder was Maximilien Robespierre. Now in Hindi I am explaining Friends of Freedom and Equality. Here you are getting two words. You are viewing two words on your whiteboard. Friends of Freedom and Equality. Freedom means what? Swatantrata. And equality means what? Samanta. So Friends of Freedom and Equality. कहने का मतलब क्या है कि स्वतंत्रता और समानता के लिए स्वतंत्रता और समानता की चाह जो उत्पन्न हुई यूरोप में, राष्ट्रवाद का उदय जो हुआ, तो कैसे हुआ? वो ऐसे ही हुआ कि स्वतंत्रता और समानता के लिए लोग इकट्ठे होते गए और वो क्या होते गए? मित्र बनते गए। तो ये मित्र जो बनते गए, तो इस समूह का नाम क्या हो गया? मित्रों के ऐसे समूह का नाम ही क्या हो गया? जैकोबिन क्लब हो गया। अब यहाँ सेकेंड नंबर पॉइंट पे बात आई थी नेपोलिटिक कोड।
ये बात आई थी। सो हु वाज नेपोलियन? So Napoleon Bonaparte, he was a French statesman and a military leader of France, and in this, when nationalism was rising in Europe, he played a pivotal role in it. Okay. So Napoleon Bonaparte was a French statesman and military leader who rose to prominence during French Revolution and led several campaigns during the French Revolutionary Wars. तो फ्रांस के क्रांति के समय में नेपोलियन ने क्या किया? अपना बहुत बड़ा इसने रोल निभाया और फ्रांस में जो युद्ध हुए उसमें इसका बहुत बड़ा क्या था? हाथ था। तो नेपोलियन जो क्या था? एक बहुत ही बड़ा प्रोमिनेंट फिगर था फ्रांस में। Now some more points that I have to discuss with you. Now the first clear expression of nationalism came with French Revolution in 1789. तो फ्रांस में जो रिवॉल्यूशन का उदय हुआ या उसका अंकुरन जो हुआ वो कब हुआ? 1789 में, 1789 में वह हुआ। And the second point that is already clear to you, the revolutionaries further declared that was the mission and the destiny of French nation to liberate the people of Europe from despotism. तो तानाशाही से यूरोप के लोगों को लिबरेट कराना मतलब क्या होता है? स्वतंत्र कराना। Jacobin club that you know, students and other members of educated middle class began setting up Jacobin club. Now what did Napoleon? Already I have discussed about Napoleon that he was a French statesman and a military leader, and he played a pivotal role in French Revolution. He fought many wars too. Now what is his main contribution? That I want to make it clear to you, that Napoleon simplified administrative divisions, abolished the feudal system. Again the one word came, feudal system. So feudal system means सामंतवादी व्यवस्था, and freed peasants from serfdom and manorial clause. सामंतवादी व्यवस्था क्या थी और व्हाट वाज फ्यूडल सिस्टम? तो उसमें बेसिकली जो कृषक होते थे या निम्न वर्ग के लोग होते थे, एक सामंत होता था और पीढ़ी दर पीढ़ी जो वो कृषक जो होते थे, किसान जो होते थे, उनकी गुलामी करते थे। जैसे उसके पिता ने किया, फिर उसके पुत्र ने, फिर पुत्र के पुत्र ने। तो ये जो प्रथा थी, ये जो समाज में ये कुप्रथा जो थी, उसका नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया? उसे खत्म कर दिया, उसे एबॉलिश कर दिया। ही एबॉलिश दिस फ्यूडल सिस्टम। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स वेयर इम्प्रूव्ड। और ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन और संचार
ये दोनों जो थे इन दोनों की व्यवस्था में जो है क्या हुआ, काफी सुधार हुआ। अब जहां तक मैंने पढ़ाया है, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग बता सकते हैं, और बोर्ड पे मैंने जो लिखा है वो आप देख सकते हैं। यू कैन व्यू इट एंड जस्ट यू कैन राइट इट, नोट इट डाउन। In many places as Holland and Switzerland, Brussels, Milan, Warsaw, the French armies were welcomed as harbingers of liberty. कहने का मतलब अर्थ ये है कि हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, ब्रुसेल्स और वारसा में जो फ्रांस की आर्मी थी, फ्रांस की जो सेना थी, उसका क्या किया गया, उनका स्वागत किया गया। क्यों स्वागत किया गया? क्योंकि ये स्वतंत्रता के मानो क्या थे, एक जैसे दूत थे, यही दूत थे, ऐसा मान लिया गया था। नाउ द लास्ट पॉइंट इज, it became clear that the new administrative arrangements did not go hand in hand with political freedom. तो ये जो नई व्यवस्था थी उसके बारे में सुनिश्चित कर लिया गया कि ये व्यवस्था जो है वो क्या हो कि हाथों हाथ वो राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ न चली जाए। यानी जो नया सिस्टम था, फ्यूडल सिस्टम को एबॉलिश किया गया, जैकोबिन क्लब का निर्माण हुआ। इधर नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया, नेपोलियनिक कोड बनाया, और उसमें उसने क्या किया कि उसने सारी जो अमीर लोगों के लिए या सम्रांत, उसने क्या किया, उसे समाप्त किया, और संपत्ति का अधिकार जो है वो भी उसने दिया उस अपने कोड में। सो this was that how the nationalism in Europe rose. So now if you have any problem, any queries, you can ask me. I will feel free to answer your queries, no problem at all. If you have any questions, any doubt in your mind, you can just WhatsApp it in a school group. कोई भी समस्या है अभी आपको जो मैंने अभी पढ़ाया है इसमें, तो वो आप पूछ सकते हो, मैं उसे बताने के लिए तैयार हूँ। So for now, this much only. Again after some time, I will move further in this chapter only. Actually this chapter is very long, and it is not like that in 1 or 2 days it will be finished, because history is a subject, if you will read then it will just engage you, and I am damn sure that I will make it engaging. And as I was discussing you before, that due to some technical reasons I am not coming live, but from tomorrow definitely, and but rather positively I should say that I will try to be live, and I am also going to make a routine in couple of days, and that will be embossed in WhatsApp group. Okay, so now thank you, and may see you in next class. Okay then, thank you.